Okay, so we're going to resume our Microsoft PowerPoint session where we have left in previous week. So we have completed the home tab, and we've discussed like how we can give the text about fonts like bold, italic, underline. We will going to change the color of the text as well, size. We're going to change there are very theme fonts as well. We have all discussed this. With this, we have discussed like how we can give the bullets, alignments, how we can insert the shapes in our presentation. With this we have discussed about the quick styles. There are many colors which we can fill it in our box, which can be make our presentation more attractive. These all things have been discussed in previous session, and the recordings has been uploaded on YouTube, so you can check it. Today even the session was premiered, so you can check it there. Okay, then we have discussed about the many theme colors that we can give it to our text. With this, we have discussed about the gradients as well. There are many gradients, dark variations, light variations, textures as well. These all things were discussed in the previous session. So now we're going to move ahead, and now we're going to work on our new slide. Like this was a title slide, and now we're going to turn towards the content slide. Like अब जो है हम लोग content slide पे जो है work करेंगे, like how you can work on the content slide. First of all, I can give a heading, any heading which I have to give. Text site was given as a heading. Let's take an example. Okay, so then how we can give it a font. Now we're going to move on the insert tab, and in previous session we have discussed about the picture editing. Like one of the main one of the main work which we have to learn on the Microsoft PowerPoint was the picture editing, and we have done in previous session. But in this session I will give you a short recap of it. लाइक आपको इस सेशन में शॉर्ट रिकैप दूंगा कि प्रीवियस सेशन में हमने क्या चीज डिस्कस की थी, बिकॉज पिक्चर जो है वो पिक्चर एडिटिंग जो है बहुत ज्यादा मस्ट है हमारे कोर्स के अंदर, और खासकर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के सेशंस में. सो दिस हाउ वी गोइंग टू create the picture, and then there are many different styles of the picture. Like you can give any style of the picture you want to give. Other thing is that we have many artistic features that was actually this was a feature that was updated in this update of Microsoft PowerPoint. So this was also discussed in the previous session. So I'm not going to explain it in detail. I was just going to gone through you all about these features. Like आप जो है यहाँ पे color features was also available, saturations, temperature. You can make your picture light as well, dark as well. You can adjust your picture as you want. Other thing is that there are many recolors as well. अब यहाँ पे कोई भी जो है कलर अपने इमेज को दे सकते हैं, कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं. like this how you can change the color of the image, the text in this image. like अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सिर्फ text change हो रहा है, मेरा background change नहीं हो रहा, because I'm doing the text color setting. Other thing is that we can also have a remove background option as well. Like if we're going to remove this background, so the background would be removed in this form. So usually जो है white images के साथ background clearly remove नहीं होता, because the background as well and the image color, both the colors were same. If I want to choose some other image that was having some another color except white, so it can remove better. Okay, so discard all changes. And then I've also discussed that you can give it this picture effects as well. like मैंने आपसे ये discuss किया था, यहाँ पे reflection, glow, ये तो हमने बहुत डिटेल में जो है वो हमने पढ़ा था, डिटेल में सीखा था, because this feature was also in the Microsoft Word as well, and the same feature was revised in Microsoft PowerPoint as well. Shadow, reflection, these all were the picture effect that you can give in Microsoft PowerPoint and Microsoft Word both. Picture borders हमने discuss किए थे. Weight, you can give your borders more weight. like आप यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा dark कर सकते हैं अपने borders को. You can change your borders into dashes. बहुत सारे यहाँ different styles यहाँ पे दिए हुए हैं, आप कोई भी जो है वो design ले सकते हैं. Other thing is that we have the color as well. You can give your borders the colors as well, which color you want to give. Okay. Other thing is that picture layout was also shown here. like यहाँ पे बहुत सारे आपको picture layouts नजर आ रहे होंगे. See on my screen, यहाँ पे आप different layouts and that you can insert in your image, and you can explain your image more vastly. So these were some picture layouts that you can insert in your image. Other thing is that you can crop the image as well. आपको यहाँ पे crop का option नजर आ रहा होगा. You can crop your image, that the thing which you want to remove, so you can crop it image as well. Other thing is that so यहाँ पे जो है बहुत सारी आपको चीजें नजर होंगी. आप यहाँ पे crop to shape as well. like आपको यहाँ पे अगर कोई भी shape crop करनी है, so you can crop your shape. like आपको यहाँ बहुत सारे जो है, if you want your shape to be in a circle form,
so your shape would be now in a circle form. Wait, I'll go to see you, like see, अब आपको यहाँ पे आपकी image circle form नजर आ रही होगी. So uh, this was actually the design that you can give to your image, circle or any other shape you want to give to your image. So these were things that was discussed in the previous session about the picture, and these all things I have roughly explained it because in previous session we have discussed in a detailed form. So now moving towards today's session, and today's session was considered about the designs and how you can work on this content slide. So these were actually the today's topic. So we're going to resume from this. So we have left on this picture album, and now we're going to move ahead, and these were some options you can see that you can have a shapes as well. आपको यहाँ shape कोई भी shape insert कर सकते हैं. This was we have done in our previous weeks. यहाँ पे आपको यहाँ पे smart art का यहाँ पे you can see the option. So you can insert any of the graphs you want to insert in your presentation so that you can explain it more easily through the diagrams. So यहाँ बहुत सारी आपको diagrams show हो रही हैं. You can insert anyone you want to insert. There you have a list as well. If you want to add a list in your presentation, like अगर आपको कोई आपका टॉपिक इस तरह है कि आपको वहाँ पे कोई लिस्ट मेंशन करनी है, यूजुअली ऐसा होता है कि द थिंग इज दैट कि कभी आपको जो है किसी टॉपिक के हवाले से एडवांटेजेस या बेनिफिट्स जो है वो मांगे जाते हैं, सो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ इट, सो यू कैन यूज एनी ऑफ दिस graph you want to use. I'm going to use one graph for your example. So see, I've selected this vertical box list, and then it was selected here, and then I'm going to press it OK. So see this how your graph would be occur in your screen. अब आपको यहाँ पे list form में एक graph show हो रहा है, and you can insert it where you want to insert. Okay, यहाँ पे हम एक example के लिए ले लेते हैं, list ले लेते हैं, computer computer machine and टेक्नोलॉजी. ओके, सो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे लिस्ट बना ली है. सो इस तरह जो है आप कोई भी लिस्ट फॉर्म कर सकते हैं, एंड यू कैन गिव अ मैनी लेआउट्स एज वेल. बहुत सारे आपको लेआउट्स शो हो रहे हैं, आप कोई भी यहाँ पे लेआउट्स दे सकते हैं. यूजली ये फीचर जो है इट वाज यूज्ड फॉर अ फ्लो चार्ट्स, लाइक when you can't able to explain in a text form, so you use this option. Like you can use this design option so that you can explain your thing in a graph form. जितनी easily आपको यहाँ graph form में यहाँ पे explain होगी वो चीज, इतनी आसानी से आपको text form में समझ नहीं आएगी. This feature was same revised in our previous session. If you move backwards, so आपको याद होगा ट्रांस नोट के अंदर हमारे पास माइंड मैप का एक ऑप्शन था, तो वहां पर भी इस तरह के ग्राफ्स जनरेट हो रहे थे, मगर दी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हैव मोर अवेलेबिलिटी एंड मोर डिजाइंस ऑफ इट. यहाँ पे ज्यादा वैरायटी है आपके पास, आप इसको अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं. So these were some displays designs, so you can easily select any of the one you want to insert. Actually ये smart art style के अंदर आता है, and we have also done in previous session this, like what is the smart art styles. Other thing is that you want to move ahead. So now this how you can insert your smart art, and then we're going to move ahead, and we have a chart option as well. आपको यहाँ बहुत सारे जो है charts आपको यहाँ show हो रहे होंगे. You can add any chart you want to add. You can say it's a chart as well, or you can say it's a graph as well. So आप यहाँ पे कोई भी जो है आप यहाँ पे chart insert कर सकते हैं. First I will going to remove this list so that you can easily see your charts. Okay, now I'm going to insert any chart you want to insert. Like आपको यहाँ पे line chart भी यहाँ आपको show हो रहा होगा. Like if you want to insert any line graph, so you can insert it. If you want to add any pie graph, pie chart, so you can insert a pie chart as well. Actually these charts were used to show any percentage or any of the amount या क्वांटिटी शो करने के लिए आप यहाँ पे दिस चार्ट्स आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं. देयर आर बार ग्राफ्स एज वेल. बार ग्राफ भी बहुत सारे आपको यहाँ पे इसकी वैरायटी शो हो रही होगी. यू हैव द एरिया ग्राफ एज वेल. लाइक यहाँ पे बहुत सारे आपको इसको मोर एडवांस जो है ग्राफ्स के अंदर you can choose any of the stacked area or any area graph you want to select, so you can select here. So this how you have many charts here, stock chart, surface, dot out, bubbles you have a radar as well. आपके यहाँ बहुत सारे जो है different charts जहाँ mention होंगे, so that you can use it in your presentation as your presentation was dependent on every level. Like अगर आपकी presentation कोई professional level की है, so you can use the surface chart, stock charts, bubbles. So these were many things you can explore in this chart option. I can insert any chart you want to see. Like if I want to insert a pie chart, so this how your pie chart would be occur. अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको पाई चार्ट नजर आ रहा होगा. अब आपको यहाँ पे कब क्वांटिटी फिल करनी है ना आपको, सो सी अब आपको यहाँ पे पाई चार्ट के साथ साथ आपको एक एक्सेल शीट ही मिलेगी. सो फर्स्ट क्वार्टर, सी first quarter is blue one. You can see on my screen that first quarter is of blue one, so I can mention it here. Any of the thing
लाइक यहाँ पे आपको कोई सा भी जो है आपको या नंबर या फिर कोई भी आप कोई इमेज आप सॉरी कोई टेक्स्ट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, लाइक सी आई कैन टाइप हियर एनी अदर थिंग, लाइक यहाँ पे एक तरह से इसको पॉपुलेशन चार्ट ले लेते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, सो आई कैन write it here China. So you can see that now China would now would be occurred your pie chart. अब आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ऑप्शन है वो रेड नजर आ रहा होगा सेकंड क्वार्टर, बिकॉज यहाँ पे सेकंड यहाँ पे यूजली जो है यहाँ पे नंबर फॉर्म में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। मैं अगर फर्स्ट क्वार्टर जो है यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर अगर मैं नंबर मेंशन करूँ, स्केल मेंशन करूँ, सी लाइक अगर मैं यहाँ पे एक स्केल मेंशन करता हूँ 7.5 का स्केल मैंने मेंशन किया है, सो सी अब ब्लू क्वार्टर ज्यादा हो गया है और एज कंपेयर टू रेड ग्रीन एंड पर्पल। और इफ आई विल गोइंग टू चेंज नंबर, लाइक अब मैं अगर सबसे कम कर दूं इस पूरे चार्ट से अगर आप कंपेयर करें तो 0.5, सी नाउ द ब्लू क्वार्टर इज वेरी लेस। सो आप इस तरह जो है अपनी मर्जी से कोई भी क्वार्टर की अरेंजमेंट कर सकते हैं, एनी स्केल यू वांट टू गिव, सो इट विल डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। ओके, सो नाउ सी द चार्ट occurred on your screen, और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे पाई चार्ट के डिजाइन वगैरह मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिजाइन हैं, कलरफुल डिजाइन भी हैं, प्लेन कलर डिजाइन भी हैं, और इस तरह आपको बहुत सारे यहाँ डिजाइन शो हो रहे होंगे। सी आपको यहाँ इस तरह आप डार्क फॉन्ट भी ले सकते हैं, एंड यू कैन प्रेजेंट इन योर प्रेजेंटेशन बाय मेकिंग इट मिनिमाइज। यहाँ पे आप कहीं पर भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, कहीं भी इसको आप पेस्ट कर सकते हैं पूरी स्क्रीन पे, डू यू वांट टू वेयर यू वांट टू पेस्ट इट। सो इस तरह जो है आप यहाँ पे पाई चार्ट insert कर सकते हैं, you can tell your viewers more clearly about the thing which you want to explain। आप यहाँ पे और easily इसको explain कर सकते हैं। okay, so अब जो है यहाँ पे इसको remove करते हैं। now we're going to move ahead and we have the option is text box। आपको ये text box मिलेगा, see this text box you will go to get and you can insert what you want to insert। so आप यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे insert कर सकते हैं, anything you want to insert in this chat box। other thing is that we have the word option as well, like if you want to make give a title heading, like you want bigger title so that it can be represent whole presentation। अगर कोई ऐसा आपको title चाहिए जो कि पूरी presentation को display करे, so you can use the word option। it has many designs of the text, so I can choose this blue color and then I want to see write it Technolitrate। सो यहाँ पे देखिए मेरा जो टेक्स्ट है वो ग्राफिकल फॉर्म में आपको मेंशन हो रहा होगा। इट हैव द शैडो एज वेल, इट वाज कस्टमाइज्ड इन दैट वे सो दैट इट कैन रिप्रेजेंट माय होल प्रेजेंटेशन। ये हमें कस्टमाइज्ड थीम में चुकी है। अगर ये मैं एक प्लेन टेक्स्ट को दूं, सो आई इफ आई सेलेक्ट दिस प्लेन टेक्स्ट, सो आई वुड पर्सनली गिव इट द बॉर्डर्स एंड ऑल द इफेक्ट्स, बट नाउ आई हैव जनरेटेड दिस फॉन्ट एज अ कस्टमाइज्ड फॉर्म। यहाँ पे मुझे कस्टमाइज फॉर्म में पहले से जो है ये बना बनाया मिल गया है। अगर मैं इसको करूं तो मुझे सारे खुद शेप इफेक्ट्स देने पड़ेंगे, शेडो वगैरह के और ग्लो जो भी मुझे देना हो। इसीलिए सबसे बड़ा इज द बेस्ट ऑप्शन, यू कैन जनरेट एनी अदर टेक्स्ट यू वांट टू जनरेट बाय देमसेल्व्स। ओके, वर्ड आर्ट ऑप्शन तो इस तरह जो है यूजुअली हेडिंग्स के लिए यूज किया जाता है वर्ड आर्ट। सो यू कैन हैव another option in the text menu which is date and time। you can insert the date and time in your presentation as well। like अभी आप जो है आप यहाँ पे बहुत सारे आपको डेट टाइम यहाँ पे मेंशन हो रहे होंगे, आप कोई भी जो है वो डेट या टाइम जो है अपनी प्रेजेंटेशन में मेंशन कर सकते हैं। like today is 25th, so if I want to select it and press it okay, so my presentation, see this was displayed on my title screen, but I don't want to paste it on my title screen, so now I will going to select it here and then 25, 6th and 22, and then it will going to disappear on my content slide। तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा यहाँ पे 25, 6, 22 जो है यहाँ पे मेंशन हो रहा है। और इसको अगर हमें जो है अगर if I want to insert it in every slide, so you can insert it on your every slide as well। like अब देखिए मैंने किसी भी स्लाइड को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, आई जस्ट क्लिक ऑन डेट एंड टाइम एंड सी I just have to tick this option date and time, and then the date will be generated। today's date was generated like 25th, 6th and 22, and if I want to show it on my slide, so see my slide numbers, footers I have mentioned। so यहाँ पे आपको बहुत सारे जो हैं यहाँ पे आपको कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, so it will be represented on footer side। see if I will going to write it Technolitrate presentation। see अभी जो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखा है Technolitrate presentation, so now it will going to be display in all my slides। see I just have to click on apply to all,
and then you can see in a below side it was displayed like Technolitrate presentation. और अब ये जो टेक्स्ट है वो मेरी हर स्लाइड पे ऑटोमेटिकली फॉर्म हो सकता है. उसके साथ आप देखें सो इट वाज डिस्प्लेइंग द डेट एज वेल. सो इस तरह आप अपनी डेट और कोई भी अगर आपको फुटर जनरेट करना है, सो यू कैन जनरेट इट इन ऑल योर स्लाइड एज वेल. So this how you will going to insert the date and time and the footer. You can also give the slide number as well. आप यहाँ पे कोई भी slide number ही mention कर सकते हैं, जहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे जैसे मैंने फुटर में जो है मैंने अपना जो है वो मेंशन किया था टेक्नोलाइट्रेट प्रेजेंटेशन. देयर यू कैन इंसर्ट एनी ऑफ द पेज नंबर एज वेल. लाइक पेज नंबर 1 आई हैव सिलेक्टेड, so it will going to disappear, it will going to be on my right hand side. See, अब आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे 2 नजर आ रहा है because the first is this slide, second is this, so it will going to mark second. So इस तरह जो है जितनी भी स्लाइड्स आप उसको नंबरिंग भी कर सकते हैं, एंड यू कैन एडिट दिस एज वेल. आप इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आपको करना है, यू कैन चेंज इट फॉन्ट एज वेल, कलर एज वेल. यू कैन डू बोल्ड एज वेल, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आपको यहाँ पे करना है इस टेक्स्ट के साथ, यू कैन डू इट. Okay, so now this how you will going to insert date and time, slide numbers, and then you to move ahead. You can also insert any object as well. आप यहाँ पे कोई object भी insert कर सकते हैं. Like आप यहाँ पे कोई भी object, आपको यहाँ बहुत सारे आपको you can see here many things was mentioned. My type, object type was mentioned. Like if I want to add any worksheet, like यहाँ पे अगर आपको Excel sheet mention करनी है, so you can mention an Excel sheet as well. Bitmap image, usually bitmap image is usually pronounced as a shape. आप यहाँ पे कोई भी shape insert कर सकते हैं. Like मैं यहाँ पे display as icon अगर mention करूँ, so यहाँ पे आप कोई भी image भी mention कर सकते हैं. Okay, so this will going to be appear on the screen. Wait a minute. Okay, so see, so यहाँ पे जो है आपको यहाँ पेन ब्रश, आपको यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई होगी. यहाँ पे आपको यहाँ पे ये wait a second, I am going to share this. ओके, सो नाउ आपको जो जब आप वहां पे कोई ऑब्जेक्ट शेयर करेंगे, सो आपको यहाँ पे एक पेंट्स जो है वो खुल जाएंगे, एंड यू हैव टू क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट हियर, एंड देन इट विल ऑटोमेटिकली सेट इट ऑन योर प्रेजेंटेशन. आप यहाँ पे कोई भी अगर आप कुछ भी आप यहाँ ड्रॉ करते हैं, सो इट विल ऑटोमेटिकली शिफ्टेड टू योर प्रेजेंटेशन. सी, योर प्रेजेंटेशन वाज हियर. सी योर प्रेजेंटेशन. सो इस तरह जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक बॉक्स का मेंशन है, इट वाज रिटन पेंट ब्रश पिक्चर. सो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आप पे पेंट्स पे ड्रॉ करेंगे आप, तो यहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएगा. यूजुअली दिस ऑप्शन वाज नॉट बीन यूज्ड इन द प्रेजेंटेशन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेनी ऑब्जेक्ट्स व्हिच वी कैन गेट फ्रॉम क्लिप आर्ट. यूजुअली जो है ये ऑब्जेक्ट ऑप्शन यूजुअली जो है वो क्रिएटर्स जो है यूज नहीं करते, बिकॉज हमें जो है वो बने बनाए ऑब्जेक्ट्स वी कैन गेट फ्रॉम द क्लिप आर्ट ऑप्शन. Or if we will don't get the object from clip art, so we can easily take it from the Google and paste the image here, because यहाँ पे बहुत सारे advanced features हैं. So अब हमें इस object को use करने की जरूरत नहीं है, and you don't have to waste your time by creating that object. You can simply took the object from internet or any of the web search. Okay, so now इसके बाद जो है आपको यहाँ पे equations, यहाँ पे you can see there was so much equations was also there. आप अगर आपको कुछ mathematical presentation you have got, so you can easily create any of the sum you want to create. या बहुत सारे आपको कुछ sums की templates यहाँ पे आपको shown हो रही होंगी. आप यहाँ पे Pythagoras theorem, और आपको यहाँ पे sum expansion of a sum, या बहुत सारे आपको mathematical questions यहाँ पे कह सकते हैं इसको equations यहाँ बहुत mention है. You can easily access it by clicking on it. अब यहाँ पे कोई सी भी जो है इक्वेशन एक्सेस कर सकते हैं आप. यहाँ पे अगर आप कोई भी अगर आपको यहाँ मेंशन करनी है, सो यहाँ पे देखिए ये जो है इक्वेशन आपको मेंशन हो रही होगी. यहाँ पे इक्वेशन यहाँ बन चुकी है, और इसको आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं. यूजुअली जो है लोग इसको यूज करते हैं व्हेन दे आर क्रिएटिंग सम मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन, सो दे यूज्ड दिस फीचर ऑफ इक्वेशन. But normally people don't use because they didn't create mathematical presentations on the PowerPoint. Okay, so now we have the video option, like how you can insert your video. Till then, if you have any question, you can ask in the chat box, so that we can move on to our second part, which is how we can create a video on the PowerPoint. If you have any question, you can ask in the chat box. Okay, so abhi jo hai aap yahan pe how we can create a video, so we're going to see that how we can create a video here. But first I'm going to make it large. Okay, so now we are inserting a video. If you have any question left behind, so you can ask. Okay,
Now, if you have simply, you have to click on video option and video from file. You can easily click on video from file and then see, I have one video here on my computer. You can simply insert that video on your presentation. Okay. See, the video was now inserted on your presentation. We have to just play it. Okay. So आपको यहाँ पे एक presentation आपको यहाँ show हो रही होगी video. First you see the video. Okay, so this was a video. Like इस तरह आप कोई भी जो है video insert कर सकते हैं and you will go to get that video on your presentation. Actually ये जो feature है आपको बहुत ज़्यादा helpful है, because एक अगर आपको presentation में कुछ ऐसी चीज display करनी है, the thing you want to display in a presentation that was linked with the presentation. अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसा topic अगर आपको मिल गया है and you have to display a video, so आप अपने presentation के दरमियान वो video भी insert करके अपनी presentation को और ज़्यादा effective show कर सकते हैं, and you will going to make it more understandable in front of the viewer by adding the video on the presentation. So इस तरह जो है video insert कर सकते हैं and you will go to paste it anywhere you want to paste. So इस तरह जो है आप यहाँ पे simply video भी insert कर सकते हैं. You have many other option as well, like आपको video tools के भी आपको बहुत सारा options you can see here. Like आप यहाँ पे जिस तरह आप image को बहुत सारे designs दे सकते हैं, इस तरह आप video को भी बहुत सारे जो है वो अपना क्या क्या कहते हैं कि बहुत सारे themes दे सकते हैं. Like you can give it many designs, themes. You can see on my screen, like आप यहाँ पे बहुत सारे जो है वो इसको theme दे सकते हैं. I will going to give simply this type of theme that will this. Okay. So यहाँ पे जो है मैंने जो है एक video style जो है मैंने search कर लिया है and I have added to my video. So अब जो है आपको मेरी video कुछ अलग तरीके से नजर आएगी. See, now the video was now being shown in the form of this style. आप इस तरह आप बहुत सारे different styles भी आप अपनी जो है video में insert कर सकते हैं. Okay. So now we're going to move ahead. With this, you're going to get the video shape as well. Normally ये होता है कि पुराने versions के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप images को ही जो है इस तरह आप उसको design कर सकते हैं. But now in this update, you can edit your videos as well in a very different form. आपके पास बहुत सारी variety होती है यहाँ पे videos के लिए. Video styles मौजूद है यहाँ पे video effects मौजूद हैं. आप इसको video effects दे सकते हैं आप यहाँ पे. So that these all features was added just because you can make your presentation more creative. जिस तरह आप जिस आप फीचर्स को यूज करेंगे उतनी आपकी क्रिएटिविटी शो होगी कि आप जो है नॉर्मली अपनी वीडियो को किस तरह इसको बनाते हैं. यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो है यहाँ पे शेडो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और यहाँ पे रिफ्लेक्शंस भी हैं. आप यू कैन ऐड एनी रिफ्लेक्शन ऑफ योर वीडियो एज वेल. यू कैन मेक योर वीडियो ग्लो एज वेल. वेट अ सेकंड, आई एम गोइंग टू मूव हियर. आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको यहाँ पे ग्लो जो है वो शो हो रहे होंगे. आप अपनी वीडियो को ग्लो अफेक्ट भी दे सकते हैं. डिफरेंट वेरिएशंस आर हियर. सॉफ्ट एजेस एज वेल. आप जो है अपनी वीडियो को जो है इसको आप जो एज होते हैं यानी कि जो बॉर्डर्स होते हैं, यू कैन मेक योर बॉर्डर शार्प एज वेल एंड थिन एज वेल. यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज हैं. 3D रोटेशंस भी हैं यहाँ पे. आप जो है अपनी वीडियो को 3D रोटेट भी कर सकते हैं. यू कैन गिव एनी ऑफ द 3D rotation to your video as well. See, there are many 3D rotations. You can add it in your video. So ये जो है बहुत ज़्यादा different और बहुत ज़्यादा unique feature है. I hope you have not experienced this before, because ये video को edit करके अपनी presentation में show करना, this was a very different thing which was get in this update of Microsoft PowerPoint under the video tools. Okay. So now there was one more thing was here, like color. You can change the color variation as well. It was a very effective feature of your video. Like अब आप जो है अपनी video color भी change कर सकते हैं. This how this Microsoft PowerPoint was so much expanded that there are many features was now inserted in this update. यहाँ पे let's take an orange color. See how this will going to display.
Now you can see your video was now totally, the video color was now totally fainted and it was switched to green color. अब आपको यहाँ पे वीडियो में हर चीज यहाँ पे ग्रीन कलर शो हो रही होगी. All the things were now shown in the green color. इस तरह आप यहाँ पे बहुत सारे different colors हैं. You can select any of the color you want to select. Okay, let me pause this video. यहाँ पे कलर्स हो गए. देन वी गोइंग टू मूव अहेड. पोस्टर फ्रेम. व्हाट इज दिस पोस्टर फ्रेम? अच्छा, अब आपको जो है यहाँ पे अब अपने जो है ये वीडियो का अगर आपको फ्रेम सेलेक्ट करना है कि अगर आपको डिफरेंट फ्रेम देना है, तो आप यहाँ पे कोई भी इमेज आप इंसर्ट कर लें. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस इमेज. सी, अब आपको यहाँ पे पोस्टर फ्रेम भी यू कैन सी. अब आपको जो है यहाँ पे वीडियो से पहले अगर आपको यहाँ पे कोई फ्रेम सेट करना है, लाइक इफ यू डोंट वांट द वीडियो टू बी लाइक दिस, लाइक ब्लैंक, अगर आपको यहाँ पे अपनी वीडियो को शो नहीं करना है, सो आप अपनी वीडियो के आगे कोई फ्रेम भी सेट कर सकते हैं. दैट आई हैव सिलेक्टेड दिस टेक्नोलाइट्रेट फ्रेम एंड यू कैन पेस्ट इट हियर एवरीवेयर यू वांट टू पेस्ट. सो इस तरह जो है आप अपनी प्रेजेंटेशन को मोर क्रिएटिव बना सकते हैं, मोर इफेक्टिव बना सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन की एक लुक जो है बहुत अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं. So this how you're going to insert any of the image you want to insert. Okay. Now I'm going to reset the design and this how you're going to insert the image video in your uh, PowerPoint presentation. Okay. Now we're going to move ahead. We have 9 minutes remaining in our session. So अब जो है हम लोग बढ़ते हैं अपने डिजाइन्स की तरफ. हम कुछ यहाँ पे डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बिकॉज दीज फीचर्स वर सो मच वास्ट एंड एडवांस. सो डेफिनेटली यू हैव एनी क्वेश्चन लेफ्ट इन योर माइंड. कोई क्वेश्चन रह गया तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में, बिकॉज on Sunday you're going to get the home assignment for on this Microsoft PowerPoint. So you have to make any presentation by using these designs. So if you have any questions, you can ask in the chat box or you can open your mic and ask it. Okay. Now we have the designs themes. Like यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है वो PowerPoint theme यहाँ पे mention हो रही हैं. You have many themes here. You can choose any other theme you want to choose here. Okay, let's choose any theme here from here. Like मैं जो हूँ यहाँ से कोई theme select कर लेते हैं. We can select this black theme so that our theme would be very much attractive. Like black के ऊपर अगर हम कोई white से contrast करते हैं, so it will be very much effective on the viewer. So यहाँ पे जो है मैंने black color की theme की एक design ले लिया है. See this title page. टाइटल पेज आपको इस तरह यहाँ पे शो हो रहा होगा. आपको यहाँ पे डेट जो है फर्स्ट पे शो हो रही है और जो नंबरिंग है वो लास्ट पे शो हो रही है. सो जो आपके हेडर्स और फुटर्स जो आप इंसर्ट करेंगे वो थीम के साथ जो है चेंज भी होते जाते हैं. कि अगर आपने जो है अपना जो है नंबर अगर आपने सेंटर अलाइनमेंट में सेट किया है एंड यू हैव चेंज अ थीम, सो वो फर्स्ट पे भी आ सकता है, वो राइट पे भी आ सकता है, वो लेफ्ट पे भी आ सकता है, वो कहीं भी आ सकता है. सो दिस विल ओनली डिपेंड ऑन द थीम यू हैव इंसर्टेड. Okay, so this was the first theme we have inserted, and there are many other options as well. If you will go to see on my left hand side, page setup. From here you can make your slides portrait form as well, landscape form as well. यहाँ पे आप जो है अपनी जो slides है उनको display करने के लिए आप portrait form भी use कर सकते हैं. You can use the landscape form as well. Usually the creator used this landscape form, but the portrait form was also better. इससे आपको एक और नया जो है एक नया जो है आपको क्या कह सकते हैं एक्सपीरियंस आएगा, लाइक हाउ यू कैन वर्क ऑन दी पोर्ट्रेट साइज प्रेजेंटेशन. ओके, सो या इस तरह जो है आप इसको पोर्ट्रेट फॉर्म में भी कर सकते हैं और इसको आप लैंडस्केप फॉर्म में भी कर सकते हैं. Okay, so now we're going to have we're going to move ahead and now we have the colors as well. यहाँ बहुत सारे आपको कलर कंट्रास्ट यहाँ पे शोन हो रहे हैं जो कि पहले से जनरेटेड है. आप इनमें से कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड these color will going to be affected not only on your presentation but on your text as well, your heading as well, your image as well. इन कलर के डिजाइन अगर आप सेलेक्ट करते हैं कोई भी कलर के डिजाइन, सो जितने भी कलर्स आपको यहाँ शो हो रहे होंगे एक लाइन में, these all color will be generated in your presentation ऑटोमेटिकली. आप कोई सा भी कलर इनमें से जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये वाला लेता हूँ. आई विल गोइंग टू सेलेक्ट दिस थीम, सो माय होल माय टेक्स्ट वुड बी चेंज इन एनी ऑफ द कलर. मेरी इमेज जो है वो सेट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी किसी भी कलर के अंदर, द कलर व्हिच वाज आई हैव सिलेक्टेड. तो यहाँ बहुत सारे कलर की वैरायटी, आप कोई सी भी कलर वैरायटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यू विल गोइंग टू गिव योर टेक्स्ट, योर इमेज, योर स्लाइड्स, एनी अदर थीम यू वांट टू गिव फ्रॉम हियर यू कैन गिव इट. Okay, so we have the fonts as well. आप यहाँ पे जो है अपनी जो presentation है, you can give any other font you want to give in your presentation, so you can select it from here. There are many fonts you can see.
any other font you want to select, so you will going to select it from here. Okay, so I want to select this option, like first option was selected. Okay, so अब जो है मेरा each and every font, my each and every font was now in this font which I was selected, like office font I have selected. So my all the font was now in the office font. Like let's take an example. I can write anything. Okay, text site codes 2022. ओके, सो इस तरह जो है आप कोई भी अगर आप चीज यहाँ पे मेंशन करते हैं, सो द फॉन्ट यू हैव सिलेक्टेड, सो द टेक्स्ट वुड बी इन दैट फॉन्ट. लाइक आपने ऑफिस सेलेक्ट किया, सो ऑफिस फॉन्ट में होगा. आपने कोई और अगर फॉन्ट सेलेक्ट किया है, सो आपका जो टेक्स्ट है वाज चेंज इन दैट फॉन्ट. तो इस तरह जो है आपने जो है वो स्लाइड्स के फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं. Okay, so moving ahead, and now we have effects as well. Like this was a very good feature that will going to make your presentation more creative. Like यहाँ पे आपको बहुत सारे जो हैं effects नजर आ रहे होंगे. आप यहाँ पे कोई सा भी effect choose कर सकते हैं. Like you can choose any of the effect you want to give to your presentation. So let's take an example of this and see what would be happen. So यहाँ पे कोई सा भी ले लेते हैं. And now let's see कि अभी जो है यहाँ पे कौन सा जो है वो font हमने जो है वो mention किया है. So when we're going to display this presentation, so the that effect would definitely be occur in this presentation. अगर अभी जो है अगर मैं आपको यहाँ पे display करूँगा presentation, so the screen share would be stop and you can't able to see the screen. But you're going to experience this effect option by yourself in your presentation, so that you're going to get that how this effect work. तो इस तरह जो है आपको पता चलेगा कि effect किस तरह work करता है. These all effects was I want to clear one thing, that these all effects was not going to be affect your whole presentation. ये effects जो है आपके text के लिए है. आपकी जो है वो slides या आपकी जो heading कुछ भी affect नहीं होगा इन effect से. आपको ये अफेक्ट जो है किसी भी टेक्स्ट को देने हैं, तो टेक्स्ट अफेक्ट होगा उससे. लाइक आपका अफेक्ट किसी भी स्टाइल में आ सकता है. लाइक डाउन टू अर्थ आ सकता है, अप टू डाउन आ सकता है, नीचे से राइज हो सकता है. मतलब ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस कह सकते हैं इसको. तो वो आपको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं अपनी इमेज अपने टेक्स्ट के अंदर. सो इट विल डेफिनेटली बी अफेक्ट योर टेक्स्ट. सो यहाँ बहुत सारे इफेक्ट्स हैं. आप इनमें कोई सा भी इफेक्ट यू कैन चूज टू योर टेक्स्ट ओनली. ओके, बैकग्राउंड स्टाइल में आपको बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड स्टाइल्स यहाँ पे आपको शोन है. यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द बैकग्राउंड स्टाइल यू वांट टू सी, सो यू कैन इंसर्ट इट थ्रू दिस ऑप्शन. आपको यहाँ पे बहुत सारे जो हैं बैकग्राउंड स्टाइल्स मिल जाएंगे. अगर आपको यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड करना है, सो आपको यहाँ पे एक मेन्यू बार अपीयर हुआ है. आप यहाँ पे सॉलिड फिल भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल भी कर सकते हैं, पिक्चर टेक्सचर भी आप जो इंसर्ट कर सकते हैं. एनी पिक्चर टेक्सचर यू वांट टू इंसर्ट इन योर बैकग्राउंड, सो यू कैन इंसर्ट इट एज वेल. आप यहाँ पे पैटर्न फिल भी कर सकते हैं. लाइक सी, now you can see there are many pattern as well. यहाँ पे आपको बहुत सारे पैटर्न भी शोन हो सकते हैं. आप यहाँ पे कोई सा भी पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी बैकग्राउंड के लिए, अपने बैकग्राउंड के लिए नॉर्मली. सो मैं जो हूँ ये वाला जो है वो पैटर्न ले लेता हूँ. दैट विल गोइंग टू मेक माय प्रेजेंटेशन मोर क्रिएटिव एंड मोर इफेक्टिव, एंड इट विल इम्पैक्ट अ गुड मार्क ऑन दी व्यूअर. अच्छा जो है वो इम्पैक्ट आपको यहाँ पे शोन हो रहा होगा यहाँ पे इन सब पैटर्न ऐड करने से. हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स अगर हम क्लिक करते हैं, सो जितने भी बैकग्राउंड ग्राफिक्स हैं, बैकग्राउंड जितने भी आपने चीजें इंसर्ट किया है बैकग्राउंड में, वो सब रिमूव हो जाएगी. एंड यू विल गोइंग टू get only one background, which was I have selected this narrow horizontal pattern I have selected. So by adding this hide background graphic, only one pattern would be on the background. So इस तरह जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको पैटर्न, एक ही डिजाइन आपको जो है अपनी बैकग्राउंड में शो हो रहा होगा. इफ आई विल चूज दिस हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक. अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, so see my previous slide was now appear. So इस तरह जो है यहाँ बहुत सारे थीम्स और बैकग्राउंड और डिजाइन यहाँ बहुत सारे मेंशन है. आप इनमें से कोई सा भी जो है वो डिजाइन आप चूज कर सकते हैं. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड टुडे अबाउट द सम स्मॉल थिंग्स लाइक हाउ वी कैन ऐड डेट, टाइम, स्लाइड नंबर्स, हेडर, फुटर्स, चार्ट्स एंड शेप्स. तो यहाँ बहुत सारी जो बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमने यहाँ पे आज डिस्कस की हैं. बट द बिगर थिंग इज दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द वीडियो, लाइक हाउ यू कैन इंसर्ट अ वीडियो, एंड वी हैव वास्टली डिस्कस अबाउट द वीडियो टूल एज वेल. किसी को अगर कोई भी क्वेश्चन है related to today's features, आज के फीचर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है, you can ask, because you have to create these slides by yourself as well. 1 minute is remaining, so you can ask anything you want to ask. Other than this, tomorrow we will going to have a last session of Microsoft PowerPoint, and tomorrow we will going to discuss about the transitions, like how we can give the transitions to our slides and the animations. Like आप अपनी text को या अपनी slide को किस तरह animate कर सकते हैं. So यहाँ पे आपको बहुत सारी animation नजर आ रही होगी, मगर ये सब चीजें जो है हम कल ही बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. Other thing is that we have
more animations, and we have the slideshow as well. आपको एक slide show form में presentation show करके दिखाएंगे कि आप जो है अपनी slide show form में अपनी जो presentation है किस तरह show कर सकते हैं. Okay, and then we have the format as well. We have many other things we have to discuss. So tomorrow we're going to discuss these all things. Other than that, we have created one demo presentation. एक example presentation हमने पहले से एक तैयार रखी है. It was actually the topic was Pakistan, about Pakistan. So पाकिस्तान के ऊपर एक presentation पहले से create की हुई है. So we have used some graphic tools in that presentation. So I'm going to display that as well. So I'm going to end this session. If you have any question left, so you can ask in the WhatsApp group or on a personal number. Thank you so much, participants.